Hello बच्चों, let's read a given question. The question says an object is released at one bank into a river flowing with speed 5 km per hour towards east. Air is blowing with speed 5 km per hour towards north. If width of river is 200 meter, then minimum time taken by floating object to reach another bank. Other bank is consider ideal situation. Option 1 given है 144 minute, option 2 3.4 second, option 3 144 second, option 4 14.4 seconds. So to understand this question, we need to understand about the relative motion in two dimension. So let's say for example we are talking about the river man problem or river wind or we can say aeroplane wind. So ये सारे problem का concept एक ही है basically. So let's suppose we are assuming कि we have a bank of river in which river is flowing, and let's say we are considering the particular case. ये हमारा north direction, this is west, this is east, and this is south. So let's say river is flowing in this direction with vr velocity, okay, and there is let's say some, we can say a swimmer, or we can say there is a boat over here which is moving in the perpendicular direction from the river, ठीक. तो with respect to river अगर हम बात करें तो velocity of this swimmer with respect to the river, right? So this is actually nothing but it can be given as, so ये जो डायरेक्शन हमने शो की है बेसिकली इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ रिवर स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, राइट? क्योंकि अगर स्विमर बन के हम रिवर में चले जाएं एंड ऑब्जर्व करें इसके मोशन को, या फिर ऑब्जर्वर बन के इफ़ वी सिट इनटू द रिवर एंड ऑब्जर्व हिज मोशन, सो इट विल बी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, राइट? सो ये परपेंडिकुलरली ऊपर जाता हुआ दिखेगा, लेकिन बाहर के फ्रेम से इट विल बी मूविंग समवेयर इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम रिस्पेक्ट वी कैन से. सो अभी फिलहाल के लिए वी कैन सी फॉर द क्वेश्चन वी कैन से वी एस आर को हम क्या लिख पाएंगे. वी एस आर विल बी नथिंग बट इट इज़ द, अगर हम मान ले कि ये विड्थ है डी, सो इट विल बी डी अपॉन द टाइम इट विल टेक, राइट? एंड दिस विल बी द मिनिमम टाइम, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं जो वी एस आर होगा इट विल बी द मैक्सिमम, ठीक है. सो वी एस आर इज नथिंग बट इट इज द velocity of swimmer with respect to river. And from this situation अगर हम कहें let's say instead of swimmer there is a block which is just we have put in on the one side of the bank. So ये सिर्फ move करेगा किसके means किसके influence में, just the wind that has been blowing towards the north that has been the given in the question, right? So यहाँ पे हम इसको एक चीज़ समझ सकते हैं, यहाँ से the situation would be time minimum will be the distance upon VSR, and VSR will be nothing but यहाँ पे we need to understand VSR is nothing but it is the velocity of wind for our case, right? हमने यहाँ पे जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने स्विमर कंसिडर किया, लेकिन इंस्टेड ऑफ स्विमर वी हैव अ ब्लॉक इंस्टेड. सो VSR जो होगी वो वेलोसिटी ऑफ विंड ही होगी, जस्ट जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो कर रही है. सो वी विल इंस्टेड ऑफ दिस वी विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ VW, ठीक है. एंड यहाँ से हम देख सकते हैं कि डिस्टेंस अगर मिनिमम है तो टाइम भी मिनिमम लगे, और डिस्टेंस मिनिमम इज दिस, यही मिनिमम डिस्टेंस है हमारा. So from this we can say T minimum can be written as distance, we can write it as to be 200 meters divided by velocity of wind is 5 km per hour, so 5 into 5 by 18. So this will be the case we are getting, and ये जो result आएगा हमारे पास this will be equals to 25, और this is, so यहाँ से देख सकते हैं ये 8 into 18 हो जाएगा, and that will be giving us the result as 144 seconds. So this is the answer to the question जो कि मैच होगा ऑप्शन 3 के साथ. I hope you understood the solution. All the best.